Now, question number 14 of problem set 5. See, they are given us a triangle ABC and G is a centroid. Now, what is the definition of centroid? Please understand. When all the three medians of a triangle intersect at one and only one point, it is called centroid. So you can see seg AE is a median to side AC, seg BF is a median to side AC, and seg CD is a median to side AB. Okay? And they all intersect in point G. So G in bracket x comma y we have to find out. Now please understand, this DEF are midpoints of seg AB, DC and AC by definition of a midpoint. Okay, now let us start with the solution. Give me a solution. Let G x comma y be the centroid of triangle ABC. Suppose co-ordinates of A, B and C are x1, y1, x2, y2 and x3, we have to find this centroid. So, how will you start? Dekho, in this question, they have not given us coordinates of vertices. Chalega, no issue. We'll start by definition of median point. D is midpoint of side AB. Therefore, therefore D का कोऑर्डिनेट क्या है? Using midpoint formula. -7 ये x कोऑर्डिनेट है, so it will be x1 plus x2 upon 2. एंड y का क्या होगा? y1 plus y2 upon 2. So x1 plus x2 will be -14 and y1 plus y2 is equal to 12. This is equation 2, this is equation 1. Okay. Similarly, by definition of median, point E is midpoint of point E is the midpoint of side BC.
So midpoint theorem से क्या होगा, ये x8 will be x2 plus x3 upon 2, and this 5 will be y2 plus y3 upon 2. So this will be x2 plus x3 equal to 16. This is equation number 3. And this will be y2 plus y3 equal to 10. This is equation number 4. Similarly, by definition of median, point F is midpoint of side AC. Therefore, 2 equal to x1 plus x3 upon 2. And y का वैल्यू क्या है, -2. -2 equal to y1 plus y3 upon 2. Therefore, we can get x1 plus x3 equal to 4. This is equation number 5. And y1 plus y3 equal to -4. This is equation number 6. Now add 1, 3 and 5. Adding 1, 3 and 5. See this 1, 3 and 5. What do you get? x1 plus x1, 2x1, 2x1 plus 2x2 plus 2x3, ये सब 2 2 हो गया. देखो x1 plus x1 2x1, x2 plus x2 2x2, x3 plus x3 2x3. अब ये -14 plus 16 plus 4, -14 plus 16 plus 4. देखो बराबर है, -14 plus 16 plus 4. तो ये होगा आपका 2 कॉमन, x1 plus x2 plus x3 equal to 6. Therefore, x1 plus x2 plus x3 equal to 6 upon 2. Therefore, x1 plus x2 plus x3 equal to 3. इसको ध्यान रखो. ये 6, ये 7th है. Now adding, अब ये 2, 4, 6 even sum. 2, 4 and 6. 2, 4 and 6 को ऐड कर दो. हमें क्या मिलता है देखो, ये सब ऐड करें तो वी गेट 2y1 जैसे यहां मिला अपने को. 2y1 plus 2y2 plus 2y3 equal to 12 plus 10. 12 plus 10 minus 4. Therefore, 2 common निकालो, you get y1 plus y2 plus y3 equal to 22. मतलब ये 18 हो जाएगा. Therefore, y1 plus y2 plus y3 equal to 9. Dividing both sides by 2. ये है आपका इक्वेशन नंबर 8. Now centroid for formula using centroid formula. X will be what? x1 plus x2 plus x3 upon 3. Y will be what? y1 plus y2 plus y3 upon 3.
फ्रॉम इक्वेशन 7 यहां, फ्रॉम इक्वेशन 8 यहां क्या मिलेगा देखो, therefore x is equal to 3/3, x is equal to 1, और यहां क्या मिलेगा, y equal to 9/3, y equal to 3। आंसर क्या पूछा उन्होंने आंसर अपने को 14 को, 14 is find the coordinates of the centroid, बराबर ना, coordinates of centroid, therefore coordinates of centroid हमने ये लिया, G is the center, G is 1, 3, got the answer। अभी हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। For that we have to erase this। Fifteenth, show that A4,1 -1, A4, -1, B is 6,0, C is 7, -2, and D। ये 15 क्वेश्चन, and D 5, -3 are vertices of। याद है हमने एक क्वेश्चन किया था 11th में, जहां हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था। इफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इट्स अ पैरेललोग्राम। और हमने जो उसके बाद 12 क्वेश्चन किया था वो हमने किया था इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑफ कोर्स मैंने वो 2 मेथड से आपको दिया था, लेकिन जो पहला मेथड मैंने किया था उसमें बताया था मैंने आपको अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके, एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट से क्या होता है, अपने को पैरेललोग्राम मिलता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट से इट्स अ रेक्टेंगल, मतलब अब पैरेललोग्राम बिकम्स अ रेक्टेंगल। अभी हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें वापस डिस्टेंस फार्मूला से इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला, अच्छा मैं सेकेंड मेथड में वो पैरेलल भी प्रूव किया था, याद है, स्लोप लेके, लेकिन वो पैरेललोग्राम में चलता है लेकिन स्क्वायर में नहीं चलेगा। हमें वापस डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना है ना। यहाँ इंटरेस्टिंग इज ये अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, वी हैव टू शो ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिकल इक्वल। इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटिकल इक्वल होगा तो क्या होगा, ये रोम्बस हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये रोम्बस के, तो वो रोम्बस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर।
याद रखो, डायगोनल्स ऑफ rhombus are not congruent, diagonals of a square are congruent, और diagonal और sides of a rhombus and side of a square all are equal. rhombus के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी चारों साइड से इक्वल होते हैं. फर्क क्या होता है, डायगोनल के जो rhombus के डायगोनल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ओके, यही हमें प्रूफ. चलो इजी है. डिस्टेंस फॉर्मूला चालू करना है. मालूम है क्या करना है x1 y1 के लिए. सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A, B, C and D are x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x4, y4 respectively. Just say अभी हमें लिखना है वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज और A, B, C, D. इजी पड़ेगा पर ये x1 y, x2 y, x3 y, x4 चलो x1 क्या है, x1 4 y1 -1, x2 y2 तो 6 and 0, ये x3 y3 7 and -2, ये x4 y4 5 and minus using distance formula. ये फॉर्मूला ही पहले ए बी बी सी सी डी ए डी हमें निकालना है. तो पहले ए बी निकालो. ए बी दैट इज द डिस्टेंस ए कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर. ये क्या होगा भाई, 6 minus 4 square. 0 minus minus becomes plus 1 square. ये बचा 2 the whole square plus 1 the whole square. This is 4 plus 1. So AB कितना हो गया, √5 units. पहला इक्वेशन. अभी नेक्स्ट ए बी हो गया, बी सी, बी एन सी. बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी कॉमा, ये निकालते हैं x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर. x3 क्या है, 7 माइनस 6. y3 क्या है, -2 प्लस -2 -0. तो ये आएगा आपस वही आपका 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. दैट इज 1 + 4 √. Therefore, BC equal to √5 units. This is your second equation, second value. Now go for CD. CD is equal to distance C comma D x4 minus x3
y4 माइनस y3, CD कितना होगा देखो, 5 माइनस 7, 5 minus 7 square plus minus 3 minus 2, so plus 2. ये आएगा आपका -2 square plus -1 square. This is again 4 plus 1 root 5. So CD is √5 यूनिट्स. ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन. इसको मैं अभी डिवाइड करता हूं. अभी यहां आते हैं पहले. आफ्टर दिस ईयर एडी निकालते हैं. एडी. सो डिस्टेंस ए कॉमा डी x4 minus x1. तो ये होगा y4 minus y1. x4 क्या है? 5 minus 4 plus y4 is -3 minus plus, तो -3 plus 1. तो ये आता है आपका 1 square plus -2 square. ये आता है 1 plus 4 √5. Therefore, AD is √5 units. यह आता है आपका 4th. अब ध्यान से देखो. 1, 2, 3, 4, all values are equal. Therefore, from 1, 2, 3 and 4, AB equal to BC equal to CD equal to AD. All sides of a quadrilateral are equal. Therefore, by definition, quadrilateral ABCD is rhombus. अब आते हैं डायगोनल पे. AC. AC equal to distance A comma C. AC. x3 minus x1. x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square. ये क्या आएगा? x3 is 7 minus 4 square. -2 minus plus हो जाएगा, तो -2 plus 1 the whole square. So AC is what? Square root of 3 square plus -1 square. So ये आएगा square root of 9 plus 1. Therefore AC is √10 units. ये आपका है 5th. 4 तक हो चुका है. 5th डायगोनल AC. अब आते हैं हम लोग. AC हो गया BD. ना, BD is equal to distance B comma D. BD is x4 minus x2. y4 minus y2. BD क्या होगा? x4 is 5 minus 6
स्क्वायर प्लस -3 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -3 + 1 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका -1 स्क्वायर प्लस गड़बड़ कर दियो, लगा ही था मुझे, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, -3 और y2 है, बोलो ना 5 - 6 और ये -3 -0, तो आपका ये आएगा -3, so this will be 1 + 9, therefore BD is √10 यूनिट्स। यह आएगा आपका 6th इक्वेशन। फ्रॉम 5 and 6 diagonal AC equal to diagonal BD, therefore quadrilateral ABCD is square। इसका रीजन क्या है? If diagonals of rhombus are congruent, then it is a square। देखो यह लिखा है लास्ट में, देखो शायद आपको दिखे अभी, ये लिखा है क्वाड्रेंट ABCD इज स्क्वायर। ध्यान से लिखो, मैं वापस में क्या बोल रहा हूं, इफ डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ स्क्वायर। नहीं तो ये अगर नहीं लिखना है आपको, बहुत लंबा पड़ता है और एक कहां सर आप लिखते, इतना जगह भी नहीं है, तो सिर्फ लिखो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, ये आपको दिखेगा भी और मेरा आंसर भी होगा। अब जानते हैं हम लोग 16th क्वेश्चन के लिए। Find the coordinates of a circumcenter, find the coordinates of circumcenter and radius of circumcircle, okay, of triangle ABC। चलो triangle ABC ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम लोगों को सर्कमसेंटर में सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल नहीं पूछा, ये ड्रॉ कर लिया हमने सर्कल, और ये ड्रॉ कर लिया हमने ट्रायंगल। तो A B C, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी। सिर्फ रेडियस फाइंड करना नहीं किया हमने, बस बाकी सब किया है। सिमिलर टाइप का किया, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमफेरेंस ट्रायंगल इफ A इज 7,1, ये आपका 7,1 है, B इज 3,5, 2,5 है, C इज 2,0, और ये सर्कमफेरेंस इसको हम लोग X, Y लेते हैं।
solution. Let O x comma y be the circumcenter of triangle AB. इसको अभी x1 y1 आप जानते हो सब. वी हैव बीन डूइंग दिस, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या करने वाला हूँ. ये आएगा x2 y2, ये है x3. देखो ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, सो AO विल बी इक्वल टू BO इक्वल टू CO. तो पहले हम लोग कहते हैं सपोज coordinates of A, B and C be x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3. कोऑर्डिनेट्स हो गए. कोऑर्डिनेट्स हो गए तो लिख लो. फॉर ए क्या है, x1 और y1. फॉर बी क्या है, x2 कोऑर्डिनेट्स मतलब ये y2. फॉर सी क्या है, x3 है, ये है y. x1 कितना है भाई, 7 और ये है 1. ये 3, x2 y2 is 5, x3 y2 is 2 comma. डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. हियर OA इक्वल टू OB, रेडिया ऑफ सेम सर्कल. So distance O comma A will be equal to distance O comma B. Therefore square root of A, O and x minus x1 square plus y minus y1 square equal to OB. x minus x2 square plus y minus y2. स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट साइन निकालना है आपने. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. देयरफॉर x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 7 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस y माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 5. अब इसको एक्सपेंड करो. x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1. दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 20. देखो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर चला गया, ये y स्क्वायर और y स्क्वायर चला गया. सब्ट्रैक्टिंग लिखना पड़ेगा अपने को फिर भी. तो ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y. ये x स्क्वायर y स्क्वायर लिख दिया मैंने और ये इस तरीके. अब ये देखो कितना है, ये माइनस 14x और ये माइनस 6x इस साइड आ क्या, तो साइन प्लस हो जाएगा. अब ये माइनस 2y 10y इस साइड लेके आएगा तो प्लस इक्वल टू ये 25 प्लस 9 इज 34 और ये आपका 49 है. दिस इज 49 प्लस 150, तो ये आपका आएगा माइनस 50. सी एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 14x और ये प्लस माइनस इस आएगा तो प्लस हो जाता है, प्लस 6x
ये -2y minus 10y comes on the left hand side becomes plus 10y. ये 49 plus 150 उस साइड गया तो -50 और 25 plus 9 34. तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ये होगा तुम्हारा 8x plus 8y equal to -16. Dividing both sides by 8 -8. मुझे नेगेटिव साइन निकालना है. So we get x minus y equal to 2. This is your first equation. AO is equal to BO हो गया. अभी OA equal to OC लो. Similarly, OA equal to OC. Radius of same circle. That is distance OA OC. Therefore, distance OA कितना है? ये तो सेम है. x minus x1 the whole square plus y minus y1 equal. अभी आते हैं डिस्टेंस OC पे. x minus x3 आएगा. So x minus x3 the whole square plus y minus y3 the whole. अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज. ये वैल्यूज एज इट इज होंगे. अब इसके पहले स्क्वायरिंग बोथ. क्या होगा ये x minus 7 plus y minus 1. यहां तक तो हो गया, लेकिन यह भी अपन डालना पड़ेगा. x minus x3 कितना है 2. y minus y3 कितना है 0. तो यह एक्सपेंड करो. Therefore x square minus 14x plus 49 plus y square minus 2y plus 1 equal to x square minus 4x plus 4 plus y. ये x square minus ये x square इस साइड लेके आया. साइड चेंजेस साइन चेंजेस माइनस x square प्लस y square ये है. ये y square इस साइड हो गया, उसका साइन चेंज हो गया. माइनस 14x. ये माइनस 4x इस साइड आ गया तो उसका साइन चेंज हो गया, प्लस 4x हो गया. ये माइनस 2y एज इट इज. तो x स्क्वायर y स्क्वायर x और y ले लिया. अभी कांस्टेंट 49 प्लस ये है 4 एज इट इज, और ये 49 प्लस 1 इज 50. सो माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे. ये होगा आपका माइनस 10x minus 2y equal to minus 46. Dividing both sides by minus 2. तो ये आएगा आपका 5x plus y equal to 23. ये है आपका इक्वेशन नंबर 2. देखो ये x minus y equal to 5x plus y equal to 20. y का कोऑर्डिनेट y का कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ वैल्यू साइन अलग है. तो ऐड करो. एडिंग इक्वेशन 1 एंड क्या होगा ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 और ये है 5x प्लस वाई इक्वल टू 20. ये चला गया तो ये 6x equal to 25. So your x value is 25 upon 6. थोड़ा अनयूजुअल है लेकिन यही आंसर है, चिंता मत. Put the value would be value of x in
इक्वेशन 1। तो क्या आएगा देखो आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2, therefore 25/6 minus y equal to 2, therefore minus y equal to 2 minus 25/6. So minus y कितना होगा 12 minus 25 full upon 6. तो ये आएगा minus y equal to minus 13/6. So y is 13/6. Hence we got the answer. क्या आंसर है अपना? Therefore coordinates of circumcenter. Answer. Coordinates of circumcenter are 25/6, 13/6. तो आपकी ये आंसर मिल गया। उसके बाद हम 17 पे जाएंगे। गिवन ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट द डिवाइड सेगमेंट ए बी। अच्छा, रेशियो दिया है, आपको पी पॉइंट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ये बहुत इजी है। चलो इसको निकालते हैं, सिस्टम और इरेज करते हैं। क्या दिया है लिखो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, ये सोल्यूशन 17 ये दिया है। अभी पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इजी पड़ता है। ये ए है और ये बी है। सो दे आर गिवन अस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ए कितना है भाई 4 एंड -3। बी इज 8 and 5। सपोज ये पॉइंट पी है, ये 3:1 है, तो थोड़ा और इस तरह ये m is 2n में एंड दिस इज 3 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट। ये हमें फाइंड करना है। लेट px, y डिवाइड्स सेग ए बी, ये डाल लेते हैं। डिवाइड सेग ए बी इन रेशियो m:n, where m/n is 3/1. Suppose coordinates of points A and B are x1, y1, x2, y2। तो ये आपका x1, y1, ये है x2, y2। We have to find x and y using section formulae।
x will be mx2 plus nx1 upon m plus n, and y will be my2 plus ny1 upon n plus. So x will be equal to m is 3, x2 is 8, plus n is 1, x1 is 4 upon 3 plus 1, और y है ये 3, y2 is 5, 1, y1 is minus 3 upon 3 plus 1. इसको ऐसे किया तो भी चलेगा. Therefore x is equal to 24 plus 4 upon 4. Therefore x is equal to 28 upon 4. So x is equal to 7. Therefore y equal to 15 minus 3 upon 4. So y is equal to 12 upon 4. Therefore y is equal to 3. Therefore, the answer. Therefore, co-ordinates of point which divides sig AB in ratio 3:1 is 7, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 17. नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 18. पहले इसको इरेज कर देते हैं. हमें देखने हैं पॉइंट्स. कौन से पॉइंट्स कहाँ? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स. 18 क्वेश्चन का है a -4, -2. b -3, -7. c 3, -2. D 2, 3. We have to find type of quadrilateral. ये कौन सा टाइप का क्वाड्रेटल फॉर्म हो रहा है? देखिए सोल्यूशन. सपोज यू नो x1 y1 हो सब लिखना है आपको. सपोज को और ये आसान पड़ता है, एक बार लिख लो x1 y1, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं. फॉर्मूला में सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b c and D are x1, y1, x2, y2, x3, y3, and x4, y. डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. AD चलो ए बी लेते हैं पहले. अच्छा पहले वो लिखो ना, फॉर ए क्या है, फॉर बी क्या है, फॉर सी क्या है, फॉर डी. चलो आप लोग लिखो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, लिखो और मैं लिखता रहा हूँ.
अभी आपने लिख लिया होगा, एज्यूम करता हूं. सो x1 इक्वल टू y1 x2 x3 x4 x1 y1 ये है, सो -4 -2 x2 y2 ये है, -3 x3 y3 वो है -3n -2 और ये 2n. चलो फाइंड करो ऑल वैल्यूज. डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ई डी निकालो एंड लेट सी व्हाट हैपेंस. ए बी डिस्टेंस ए कॉमा ए बी के लिए आप जानते हो x2 माइनस x1 है, तो ये x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये कितना होगा देखो, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -3 प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, सो -7 प्लस 2 द होल स्क्वायर. तो ये आएगा आपका 1 द होल स्क्वायर प्लस -5 द होल स्क्वायर. ये आएगा 1 प्लस 25. सो ए बी विल बी रूट 26 यूनिट्स. ए बी हो गया. अभी बी सी, ए बी बी सी निकालो. बी सी इक्वल टू डिस्टेंस बी कॉमा सी स्क्वायर रूट ऑफ, इसको इक्वेशन 1 है. बी सी है x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. x3 is a 3, this minus of minus plus 3 square plus -2 plus 7 माइनस माइनस ना प्लस हो जाता है. तो ये आता है आपका 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. इसके भी 2 पार्ट करने पड़ेंगे कि बदला लेंदी क्वेश्चन है ये. सॉल्यूशन मतलब so BC will be square root of 36 plus 25. 61. 61 units. AB 25 हो गया. और अपना BC रूट 61 हो गया. रूट 26 और रूट 61. AB हो गया, ये इसको 2 लेते हैं. AB हो गया, BC हो गया, BCD पे. CD will be equal to distance C comma D. This will be square root of C or D, x4 minus x3. ये क्या होगा, 2 minus 3. थ्री प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता. ये इस तरह होगा, देखो पॉजिटिव -1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो ये आता है आपका 1 प्लस 25 रूट 26 यूनिट. अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं भाई. अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं आप देखो बच्चे. इसका मतलब क्या हुआ, हिंट है पैरेललोग्राम की, लेकिन रेक्टेंगल भी हो सकता है. सो हैव पेशेंस.
ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी होगा, ए डी। डिस्टेंस ए कॉमा बी, therefore AD equal to x4 minus x, sorry, x4 minus x1, a है ना, x4 minus x1 plus y4 minus, कितना होगा 2 minus minus plus, so 2 plus 4, minus minus plus हो जाता, 3 minus minus प्लस हो जाएगा, तो 3 plus 2, ये इसके ऐसा होगा 6 square plus 5 square, so AD will be 56 plus 25, so AD will be root 61 units. Opposite sides are congruent, parallelogram. Since here from 1 and 2, from 1 and 3, from 1 and 3, AB equal to CD. From 2 and 4, BC equal to A. Since opposite sides of quadrilateral are congruent, therefore quadrilateral opposite sides of quadrilateral are congruent, इतना ही लिखो पहले, opposite sides of quadrilateral are congruent. बाद में लिखते हैं फाइनल, अभी डायगोनल देखते हैं, जिसमें मैंने सीधा क्वाड्रिलेटरल पूछा, हमें दो नहीं लिखना है, AC निकालते हैं अभी ना, AC इक्वल टू डिस्टेंस AC, ये डायगोनल है, AC x3 minus x1 square plus y3 minus y1 square, so ये होगा आपका 3 minus minus plus हो जाएगा, so 3 plus 7 the whole square plus minus 2 minus minus plus हो जाएगा, so minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 square, ये minus 2 plus 2 0 हो जाएगा, so this will be 10 square, so this will be simply 10 AC, 10 units, square root और root, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 है ना, AC हो गया, डायगोनल BD है, BD distance B comma D. x4 minus x3, x4 minus x3 square, y4 minus y3 2 minus minus plus, so 2 plus 3 plus 3, ये minus minus plus 3 plus 7, तो ये आएगा 5 square plus 10 square, $25 plus 100, 125,
25 5. So it is 5 root 5. कुछ तो गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं क्या मैंने क्यों इसको नहीं किया। I could have written here, since opposite sides are congruent, it's a parallelogram. I was up based लगा था, it was a bait होता है, एक लालच तैयार होता है कि कुछ खत्म कर देते हैं। नहीं, तो शो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तो नहीं है ना, तो ये रेक्टेंगल, तो ये हमें थोड़ा अननेसेसरी एक्सटेंशन नहीं करना पड़ेगा भाई, कि ये बताना पड़ेगा नॉट इक्वल, ये नॉट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम हियर, देयरफॉर फ्रॉम 5 and 6 diagonal AC not equal to diagonal AC. Therefore only opposite sides of quadrilateral ABCD are congruent. Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Okay, let us start with question number 90 of problem set 5. See, they are given us a big segment. You can see segment AB, and is divided into 5 equal parts. Segment AB is divided into 5 equal parts like this. See, AB has coordinate of A we don't know, coordinates of P we don't know. Coordinate of Q is given to you as 12 and 14. Coordinate of R we don't know. Coordinate of S is 4 and 18. Coordinate of B, coordinates of B we don't know. So let coordinates of AB x1 y1, PB x2 y2, RB x3 y3 and BB x4 y4. We have to find coordinates of A, P, R and B. I have solved this here, because the lengthy questions I want to accommodate it on the whiteboard. So let's see. Now, please see. This is not given. See, these values are not given. Solved it. This is given and this is given. So please see, Q is exactly between. Q is the midpoint of A and S, because all are equal, na? AP equal to PQ equal to QR equal to SR. So AQ will be 2 times AP and QS is also 2 times AP, because this all are equal to AP only. So Q is the midpoint. So start, Q is the midpoint of A segment AS. Use midpoint formula. 12 equal to, this will be x1 plus 4 upon 2 and 14 will be y1 plus 18 upon 2. Solve karo. 24 equal to x1 plus 4. So x1 will be 24 minus 4. So x1 will be 20. And 14 equal to y1 plus 18. Cross multiply करो, so 28 equal to y1 plus 18. 18 को इस साइड लेके subtract करो. 28 minus 18 is 10. So you get x1 y1 is 20 and 10. So ये आपको मिल गया 20, 10. Now please see, really P is the midpoint of AQ. So x2 will be 20 plus 12 upon 2. So x2 will be 32 upon 2, 16.
and y2 will be y1 plus, मतलब ये 10 plus 14 upon 2. So 10 plus 14, 24 divided by 2 is 12. So ये बहुत easy question है. 16 and 12. ये तो हमें मिल गया. Now please see, Q is the midpoint of, R is the midpoint of Q and S. So S3 will be 12 plus 4 upon 2. So therefore 12 plus 4 is 16 upon 2 is 8. So X3 will be 8. Y3 will be 14 plus 18 upon 2. So 32 upon 2 is 16. तो ये मिल गया. So midpoint formula. Now S is the midpoint of RB. So this 4 will be 8 plus x4 upon 2. So 4 to the 8. 8 equal to 8 plus x4. So x4 will be 8 minus 0. तो ये मिल गया. 18 equal to 16 plus y4 upon 2. So 18 to the 36 equal to 16 plus y4. 16, so bring it on left hand side, side changes, sign changes. 36 minus 60 is 20, so y4 will be 20. So ये आपको 0 and 20 मिल. So we got all the coordinates needed. अब यहाँ पे let O x comma y be the center of a circle passing through P, Q and R. We know OP equal to OQ, radii of the same circle. So using distance formula, distance OP will be equal to distance OQ. Square root निकालो, it will be x minus 6 square plus y minus minus plus होता है y plus 6 the whole square equal to square root of, अभी OQ चाहिए. So x minus 3 the whole square plus y minus minus plus, so y plus 7 the whole square. Taking square root on both sides, तो square root sign चला गया. अंदर क्या बचा? अभी what is left? X minus 6 the whole square plus x plus 6 the whole square equal to x minus 3 the whole square plus x plus 7 the whole square. इसको expand करो. a minus b the whole square क्या होगा? ये a square minus 2ab plus b square. इसका मतलब आइडेंटिटीज हम लोग बहुत बार कर चुके हैं. सो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस 6x इंटू 2, सो 12x प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका भी y स्क्वायर प्लस 6y इंटू 2 इज 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36. सेम वे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2 इज 6x, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर 7y इंटू 2 14y प्लस 7 का स्क्वायर 40. ये जो अंडरलाइन किया है ना मैंने, एक्स स्क्वायर गेट सब्ट्रैक्टेड, वाई स्क्वायर गेट सब्ट्रैक्टेड बिकॉज दे आर हैव सेम साइन ऑन अपोजिट साइड. तो इस साइड लेके आओ या उस साइड एक जगह पे लेके आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाए. व्हाट इज लेफ्ट? ये है माइनस 12x और ये माइनस 6x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं. साइड चेंजेस, साइन चेंजेस. सो इट विल बी माइनस 12x प्लस 6x प्लस 12 एज इट इज, और ये प्लस 14 को ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू बी माइनस 14y इक्वल टू, दिस इज 49 प्लस 9 इज 58 माइनस 36 प्लस 36 इज 72. सो माइनस साइड चेंजेस, साइन चेंजेस. माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 14 माइनस 2y equal to 78 minus 72 is minus 14. Dividing both sides by minus 2. You get 3x plus y equal to 7. ये equation 1 हो गया. Same way like OP is equal to OQ. Same way OQ is equal to OR. Radii of the same circle. Radii of same. वापस लाओ डिस्टेंस फॉर्मूला से. ये OQ सेम आएगा. देखो ये साइड यहां तक स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये OR देखना है हमें, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो रूट साइन चला गया. क्या बचा? x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर. दिस एंटायर टर्म इज सेम. तो इसको इस साइड लेके आओ, साइड चेंजेस, पूरा टर्म माइनस हो जाता है.
तो बचता क्या है, y प्लस 7 द होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3 द होल स्क्वायर। देखो ये इसको इस साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, पूरा माइनस निकल जाएगा। तो बचा y प्लस 7 द होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3 द होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करो, 7 स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। वापस ये y स्क्वायर इस साइड लेके आओ, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, व्हाट इज लेफ्ट 14y। ये माइनस 6y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, साइड चेंजेस साइन चेंजेस, so 14y plus 6y equal to, ये 9 as it is 49, bring it on the right hand side, side changes, sign changes, so minus 49, 14 plus 6 20y, और 9 minus 49 minus 40, divide करो by 20, you get y equal to minus 2. Now substitute this value of y in equation 1, 3x plus y equal to 7, 3x minus 2 equal to 7, so we get 3x equal to minus 2 को साइड लेके आओ, y 7 plus 2, so 3x equal to 9, dividing both sides by 3x equal to 3. So coordinate of the center of circles are 3, x is 3 and y is minus 2. See in problem set 5, 21st question, what they have given us is, they have given us, they have informed us that A, B, C, D, see what I am saying, A, B, C, D is a parallelogram, okay, they already given it. They also say that the three vertices A, B and C are the vertices of a parallelogram. You have to find the coordinate of the fourth vertex, that is D. Now this fourth vertex D can be placed in three different positions. Look at this. A, B, C, A, B, C, D, this can be the position of D. If you produce this on left hand side, A, B, C, D, this can be position of D. Or it can be A, B, C, D. So there will be four different possible positions of vertex D. Here please understand, I am not considering clockwise and anti-clockwise naming of a parallelogram. Here they are clearly mention all the possibilities. So when they are telling you that you have to mention the possibilities, hence we have to take all the three practical possibilities. Now point A is having coordinates 5, 6, B has coordinates 1 and minus 2, C has coordinate 3 and minus 2 are the three vertices of a parallelogram. This is given. But for the fourth vertex D, there are three possibilities as shown in the figure. D1 with coordinate x1, y1, D2 with coordinate, supposed coordinate x2, y2, and D3 a supposed coordinate is x3, y3. Hence I am using the word say stands for supposition. Now AB D1C is a parallelogram from given and the figure we can see. Then we know opposite sides of parallelogram are congruent. That means AB will be equal to CD1. Opposite sides of parallelogram are congruent. Similarly, we can say ABCD2 is a parallelogram. Therefore, AB will be equal to CD2. Opposite sides of parallelogram are congruent. From this, what we conclude? From this, we conclude that if left hand sides are equal, the right hand sides are equal, like AB congruent to CD and AB congruent to CD1, AB congruent to CD2, then CD1 and CD2 are congruent, but they are in the same straight line. Therefore, C must be, or C is, the midpoint of segment D1, D2. Similarly, we can show, इसको अब ये हो गया,
Then we can, so similarly we can show D is the midpoint of segment D1, D3, and A is the midpoint of segment D2, D3. हो गया, all तीनों midpoints हमने ले लिए. अब midpoint formula लेना है. So let us start now. C is the midpoint of segment. पहले लेते हैं C is the midpoint of segment D1, D2. Shown above. So using midpoint formula, what is this? 3 will be equal to x1 plus x2 upon 2 and minus 2 y के लिए minus 2 will be equal to y1 plus y2 upon 2 midpoint formula. Cross multiply करो. So you get x1 plus x2 equal to 6 और ये आएगा y1 plus y2 equal to minus 4. I got equation 1 and equation 2. Similarly, if B is the midpoint of segment D1, D3, then we get 1 equal to x1 plus x3 upon 2 and minus 2 equal to y1 plus y3 upon 2. इसको solve करो, we get x1 plus x3 equal to 2 and this is y1 plus y3 equal to minus 4. Now A is the midpoint of D1, D3, therefore 5 equal to x2 plus x3 upon 2 and 6 will be y2 plus y3 upon 2. इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, we get x2 plus x3 equal to 10 and y2 plus y3 equal to 12. अब ये इक्वेशन 1, 3 and 5 you add, you get x1 plus x1 2x1, x2 plus x2 2x2, x3 plus x3 2x3. मैंने 2 कॉमन निकाला, इनसाइड ब्रैकेट x1 plus x2 plus x3 equal to 6 plus 2 8, 8 plus 10 18. अब dividing both sides by 2 करो, so we get x1 plus x2 plus x3 equal to 18 divided by 2 is 9. ये अपना equation 7. Now add 2, 4 and 6 even numbers, even equation. ये भी वैसा ही है, y1 y1 दो बार, y2 y2 दो बार, y3 y3 दो बार. So 2 common inside bracket y1 plus y2 plus y3 equal to ये minus 4 कितना होता है? minus 8. 12 minus 8 is we get 4. Dividing both sides by 2, we get y1 plus y2 plus y3 equal to 2. सॉल्व करो. अब ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 क्या है? x1 plus x2 equal to 6. ये इक्वेशन जो x1 plus x2 के बदले instead of x1 plus x2 write down 6. देखो यहाँ 6 plus x3 equal to 9. So x3 will be 9 minus 6, 3 हो जाएगा. सेम में यहाँ y plus y2 is minus 4, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो minus 4 plus y3 is 2. So y3 will be 4 उस साइड गया, plus 4, 2 plus 4, 6. So x3 and y3 मिल गया. Once you get that, now put this equation x3 in equation, sorry, value of x3 in equation 3. x1 plus x3 is equal to 2. अभी x1 plus x3 कितना है? 3 equal to 2. 3 को उस साइड लेके जाओ, आपका आंसर -1. Same way here. Once you know y3 is equal to 6, put here in equation 4. y1 plus 6 equal to -4. 6 उस साइड लेके जाओ, -4 -6 -10. So x1 y1 मिल गया. Now put x1 y1 in equation 3. Equation 1 में डालो, because x2 चाहिए ना. So put here क्या मिलता है देखो, -1 plus x2 equal to 6. माइनस उस साइड लेके जाओ, 6 plus 1 equal to 7. ये -1 is equal to 10. So put, इसमें थोड़ा चेंज करना होगा. इन इक्वेशन 2 में डालो. देखो क्या आएगा, y1 plus y2 equal to -4. y1 is -10, so -10 plus y2 -4. So -10 उस साइड जाएगा, -4 plus 10 is 6. So we got x1 y1, x2 y2, x3 y3, and they are nothing but the all possible coordinates of point D. So अपना हो गया.
Now we go to the last question of last question पे जाते हैं 22nd. Find the slope. Now they say find the slope of diagonals of quadrilateral with vertices A, B, C, D. Quadrilateral दिया A, B, C, D. A का कोऑर्डिनेट कितना है? B, C, D. A is 1763, ये 17 और ये 6,3 और दूसरा है 0 -1, 0 -1 -3 and 3. 0 -3 -1 नहीं है, 0 -3 -3 and 3. To find the slope, देखो कोई भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करोगे ना ए बी सी डी, तो स्लोप ऑफ अ डायगोनल विल बी ए सी एंड ये बी डी. यू टू फाइंड स्लोप ऑफ ए सी एंड बी डी. तो हम जैसे हमेशा की तरह लिखते हैं ना, सपोज x1 y1 y2 y2 जो भी है, चलो वो लिख लेते हैं और बाद में स्लोप निकालते हैं. Question, solution. Let co-ordinate of points A, B, C and D be x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 respectively. It just say therefore for A, for B, for C, for D. x1 equal to y1, x2 equal to y2, x3 equal to y3, x4 equal to y4. लिख दो. A is x1 y1, so 1 7 6 3 0 -3, therefore slope of लिखो in quadrilateral A, B, C, D, diagonals are sec AC and sec BD. Therefore slope of line AC, पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन AC, A और C, y3 minus y1 upon x3 minus x1. y3 कितना है? -3, -7, 0, so -10 upon -1 is 10. Therefore slope of line
AC is 10. Slope of line BD, B or D, y4 minus y2 upon x4 minus 2. y4 कितना है? 3 minus 3 upon minus 3 minus 6. So ये आता है 0 upon minus 9. Anything, because 0 upon anything is 0 only. Therefore, slope of line BD equal to 0. ये बताएगा this is parallel to which axis. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, just go and revise. देखो इसके y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, so this line is parallel to x एक्सिस अलग अलग है, सॉरी x कोऑर्डिनेट अलग है, x कोऑर्डिनेट 6 और अलग अलग है, लेकिन हाँ, so it has to be parallel to x axis. This line is parallel to x axis because का y कोऑर्डिनेट फिक्स है. देखो ये ऐसे, y is 3 ना, पॉजिटिव, so 1, 2 and 3, ये ऐसा होगा. इसके all y coordinates are same. x coordinate क्या है? ये कुछ ऐसा होगा 4, ये है -3 ना, so 1, 2, 3, तो ये ऐसा होगा कुछ -3, 3, और दूसरा पॉइंट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, from here 6, 3. So इसका slope, a line which is parallel to x-axis has its slope 0. So इसके साथ अपना chapter 5 is completed.